Hi guys. This is LEETCODE weekly contest 358, which happened today. Just ended previous 10 minutes. So yeah, 358. Let's go around. So first, you have, let's say first we go over C problem. Given as minimum absolute difference between elements with a constraint. So essentially, this is what you need to do. You have to find a minimum absolute difference between elements. There are some elements, and yeah, the difference between every pair of element. You want to find some minimum such difference. Is that so simple? Like if it was the case, then you say that minimum difference I can get between the two elements, adjacent element in the sorted array. But that was not the case. You uh, have to find absolute difference between two elements, but the constraint is that it's not like that simple that you can pick any two elements. You can pick only two elements if the distance between them is greater than some quantity which is fixed. It's x. Now what we need to do is, for 1, I can only consider if x is equal to 2. For index 0, I can consider index 2 and after that, right? 2, 3, 4, so on. For 1, I can consider after 3, for so on. So this is what is it is. There is a difference. There is a of this window of length 2. How I did it? It is really like, just you need to see that okay, this element can match up with these element, but matching up is not fine. Like we could have done something like prefix maximum, prefix minimum, suffix maximum, suffix minimum, but that does not work here. Why? Because you have to find the absolute difference, not the minimum element which comes after this. It's not like that. Otherwise you could have done it using suffix minimum kind of thing. You have to find the such element in the that region which gives minimum difference when I do yeah, minimum absolute value when I do the difference. So for that also, what you can do key, I want nearest element. For 4, I what is the nearest element after this 2, right? Okay, let's see like that. So yeah, that's is the logic. So हम set में push करेंगे अपने all the candidates. So for candidate starts from 2. 2 has one candidate, 4. Okay, 3 has no candidate. If I talk about only left side, I'm talking about only one side. Okay, and similarly, because this has only one candidate, 4. 4 has two candidate, 4 and 3. So he will choose 4, and that's how you got 0. Similarly, in this x equal to 1, 3 has one candidate, 5, 2 has candidate 3, and that's why answer is 1. And in this 3, so neither this has candidate, neither this has candidate. I think 3 has one candidate. No, even this is not. So 4 has one candidate, 1. That is the only option he will pick. Okay, and save that. So how do I go that? So I keep my starting pointer at 0, my current pointer at index x, and then I first of all push that starting pointer into a set kind of a thing. Then I see what is my current element, let's say 2. So I see whatever is present in the set, give me the nearest value of 2. So you can do that by lower bound kind of a thing. Lower bound points to a iterator which is equal to or just greater than, or just yeah, equal, greater than or equal to this point. So maybe if the value, if you got the same value, then very good, like yeah, you just return 0. If you got some greater value, let's say by 1 unit, so you can say a minimum absolute difference is 1. But is it so? No, you have to consider one element which comes before lower bound also, because the difference you need to consider. Difference can be, let's say for 2, 3 is also 1 unit and 1 is also 1 unit. So if your search gets you to 2, answer can be either 3 or answer can be either 1. So that's why you have to keep track of two iterators. One is just after the, not after the lower bound. One is the lower bound. Second is just previous then lower bound. Okay, these two iterator you have to keep track. So I have somehow like did a simulation to keep track of that. So nx is the lower bound only, nothing fancy, and pr is the, yeah, one previous then lower bound. And then I compare the values for each, but the main logic is to set me only candidates are there, only candidate. By what I mean that I'm starting my loop from x. So when I go to x, while my current pointer is at x, then I push my first thing in the set, b0. So that's how you only have candidates at a moment in the set, and then the only thing remains is to find the appropriate candidate.
uh, which is lower one and just previous than that. Let's move to the second problem. Double the number using linked list simulation. I'll just say simulation. My way of approaching it would be different than your way. So I took this linked list, I extracted the number as a string, then I created the doubled the string which is the double of this number, and then I push it into linked list. Other approach could have been ki you just do it using the linked list only, or you do it using string and one linked list. So I'm using two strings and two linked list. This is approach. So first string gets the number out of this linked list, and second string is a modified version, which is just that string multiplied by two. This is how I got into string. First, this is first part, getting the linked list into string. I just check whatever my string is. Then this is the second part, converting the string to a modified string L. So this L is the 2x. Exactly. Like if x is my number, L represent 2x in form of string. So then I need to 2x in reverse order. First of all, that is the like how I did it, and then I converted it into back to a linked list, and then I returned the linked list using just a dummy pointer and temporary pointer. So this is the standard part, very that you have to construct a linked list out of a string. This is also very standard part when you have to take care of carries and all in multiplication and summation of strings. Big numbers cannot be just represented as integers, so use strings for that. Now, after this first question was really like think a simulation again. Max pair sum in array. Um, Give a pair which has a maximum sum. Constraint is added that digit on both numbers should be equal. But to equalize the constraint over here, like actual, what I say, there is a bit relaxation in time complexity terms. So I did n square. You could have also done, I don't know, digit dp. No, I think n square is fine for it, man. Obviously, if it is 100, so go for n square. For each number, see all the other numbers. For each number, I'm seeing all the other numbers, and then come checking if the maximum digits is same, then doing a sum. Yeah, that's all. Fourth question, let me explain, and I'll create a separate video for this one. So you have been, first of all, apply operations to maximize score. So there is something called score, which you have to maximize, like all other games. But you apply operation, obviously. So what are the operations? How you are maximize? What is the current score? How you maximize score? So score is the value of the element which you are taking, and it keeps on getting multiplied. So let's say I pick element E1, then E2, then E3. Score would be E1 into E2 into E3. But why can I choose even? How can I choose even? I want, obviously, if that is a score, then you would want your even to be maximum, E to be second maximum, or maximum E3 also to be maximum. Okay, so max into max into max give you max score. But there is a condition.
So yeah, the score should be maximum, and E1, E2, E3 should be maximum, but you cannot always pick maximum. That is a condition that you only choose a element um, which has highest prime score. Actually, you can't just take one element multiple times. You can take one element multiple times, but the thing is, how you're selecting an element is a bit different. You are choosing by using a sub array. So you have to ask for a sub array. So that gives you a sub array. Then you see the appropriate element in that sub array, and then you multiply it by x. So essentially, we are multiplying by x a number. A number can be multiple, same multiple times. Like in this case, first scenario, I can tell you that whatever we are doing, forget about the sub arrays. The essentially 9 into 9 is happening, and that's why you're getting 81. But the sub array is different each time, and that is the condition of the question. You cannot pick same sub array multiple times. If that would be the case, then तो हर केस में आंसर मैक्सिमम की पावर k होता, 9 की पावर 2 है, 19 की पावर 3 होता, बिकॉज मैं हर बार 0,0 0,0 0,0 वाला सब एरे चूज कर लेता. सो अभी क्या हो रहा है, 0,0 मैंने एक बार चूज करा, चाहे तो मैं 0,1 चूज कर सकता हूँ. सो देर इज अ पोटेंशियल दैट की 19 आ जाए, बट आई नो कि देर इज नो वे दैट की 19 आ जाए, बिकॉज द कंडीशंस आर डिफाइंड लाइक दैट. सब एरे में से कौन सा एलिमेंट आएगा, अगर एक ही एलिमेंट है तो वही आएगा, तो देर इज नो थिंकिंग अबाउट इट. बट अब 19,19 दोबारा मैं नहीं कर सकता, तो अब दो एलिमेंट है, 19,12. वो एलिमेंट आएगा जिसका प्राइम स्कोर ज्यादा होगा. प्राइम स्कोर इज अ फैक्टर विच इज एसोसिएटेड टू एवरी नंबर, और वो चाहे तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो फॉर ईच नंबर अप टू 1E9, तो नहीं पर 1E5. ये प्री कंपटीशन तुम कर लो अपनी साइड से. हर नंबर का प्राइम स्कोर तुम्हें O1 टाइम में अवेलेबल हो जाएगा. इट्स नॉट अ बिग डील. दैट इज n log n और n root n kind of thing. Just need to see number of prime factor that it has. सीव से भी करोगे तो भी n log n में हो जाना चाहिए, और डायरेक्टली अगर नॉर्मल बिना सीव के भी करोगे तो n root n में हो जाएगा. ठीक है, विच बोथ आर फाइन. लाइक आई थिंक 10 इज परफेक्ट के साथ. अभी यू नो कि प्राइम स्कोर किसका है. ठीक है, यू कैन नॉट इवन गो फॉर ईच सब एरे ना, कि भाई हर सब एरे मैं एक बार ले सकता हूँ. तेरा टोटल n स्क्वायर सब एरे, तो सारे सब एरे पे जाओ. नहीं, थोड़ा ग्रीडी कर सकते हो कि देखो 19 तो लेना ही है. क्या 19 दोबारा आ सकता है? कोई चांस है 19 के दोबारा आने का? थिंक अबाउट इन दैट डायरेक्शन. आ सकता है तो कितनी बार आ सकता है 19? एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया, कैसे आ रहा है? सब एरे तो चेंज हो रहा है. मतलब एक ऐसा सब एरे है जिसमें से 19 उठ के आएगा, वो एक वन लेंथ का तो है. एक और ऐसा सब एरे है जिसमें से 19 उठ के आएगा, यानी 19 का हाईएस्ट प्राइम स्कोर होगा, और बाकी जो एलिमेंट हैं उनका प्राइम स्कोर 19 से कम होगा. इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट देन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो एलिमेंट्स का इक्वल है वो 19 के राइट हैंड साइड पे आने चाहिए. बिकॉज दिस इज द कंडीशन कि जब दो एलिमेंट्स का इक्वल होता है तो हम उसको चुनते हैं जो लेफ्ट पे होता है, स्मॉलेस्ट इंडेक्स. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे. देखो, दीज आर जस्ट फैक्टर, दिस इज नॉट द होल सॉल्यूशन, बिकॉज तुम केवल ये नहीं कर सकते. मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच लुक्स सिमुलेशन बट इज नॉट. सबसे पहले जाओ, बिकॉज वो पहली लाइन पे खत्म हो गया ना कि सब सब एरे पे हम जा नहीं सकते. ठीक है, 19 के लिए एक सब एरे हमने उठा लिया मैक्सिमम एलिमेंट के लिए. दूसरा सब एरे कैसे बनाने का ट्राई करेंगे कि भाई ये तो आना चाहिए, और अब छोटा, सबसे छोटा बनाने का ट्राई करते हैं, एक और एलिमेंट को लेते हैं.
So best is to take that this element right element, but you are not say that if it is best or not. अभी तो लेफ्ट में कोई है नहीं, but let's say लेफ्ट में भी होता तो बेस्ट वो होता कि भाई लेफ्ट राइट में से छोटा कौन सा है, ठीक है, जो छोटा है उसको लो और 19 के साथ मैच कराओ। तो ऑब्वियसली 19 के चांसेस हैं कि वो छोटे वाले से तो बड़ा होगा, ठीक है। मतलब अभी आई एम नॉट सेइंग कि छोटा है 19 से, आई एम सेइंग लेफ्ट राइट में कौन छोटा है। अब हो सकता है वो 19 से छोटा हो या 19 से छोटा ना हो, और वो 19 से छोटा होगा तो 19 मेरा आंसर आ जाएगा। 19 से छोटा नहीं हुआ, इक्वल हुआ, तो वो मेरा आंसर आएगा अगर वो लेफ्ट है तो, और अगर बड़ा हुआ तो पक्का वो आंसर आएगा। तो दिस इज हाउ एक्चुअली, मतलब एक नंबर के अराउंड बिल्ड करो, 19 के अराउंड थोड़ा वेब सा बिल्ड करो और तुम्हें पता चलेगा कि एक ही लेंथ का वेब है। 18 के अराउंड थोड़ा वेब सा बिल्ड करो, एक ही लेंथ का वेब है। 14 के अराउंड अगर तुम वेब बिल्ड करने जाओगे तो दो लेंथ का है, कि एक तो 14 एज अ सिंगल मिलेगा, और 14 और 6 को लोगे तो भी 14 मिलेगा। 14 6 और 10 को भी लोगे तो भी 14 मिलेगा। 14 6 10 18 को भी लोगे तो भी 14 मिलेगा। सो वेब 14 का थोड़ा बड़ा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एक भी लेंथ नहीं बढ़ेगा क्योंकि 12 और 14 भी बराबर है तो 12 आ जाएगा। 12 का वेब देखा जाए तो 12 का वेब सबसे बड़ा है। 12 19 को भी टेक ओवर कर रहा है क्योंकि 19 का प्राइम स्कोर उससे छोटा है, और राइट वाले एलिमेंट्स को सबको टेक ओवर कर रहा है बिकॉज सबका इक्वल है, और ये सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है। तो ऐसा कुछ वेब क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई पूछे 12 तुम कितनी बार दे सकते हो, मैं 1 2 3 4 5 6 बार दे सकता हूँ। हर एलिमेंट मैक्सिमम n टाइम्स आ सकता है। आई थिंक n से भी ज्यादा आ सकता है 12 के लिए। तो कोई सा भी आप, बस ये इंक्लूडेड होना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक एलिमेंट पिक करना है, ये एलिमेंट पिक करना है, 12 तो आना ही आना चाहिए। तो ऑप्शन सो थिंक इन दैट डायरेक्शन मैन, कि एक एलिमेंट कितनी बार तुम ले सकते हो, एंड उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा कि मैक्स को कितनी बार लिया, सेकंड मैक्स को कितनी बार लिया, थर्ड मैक्स को कितनी बार लिया, अप टिल सो ऑन, जब तक तुम्हारे के पूरे ना हो जाए। ठीक है, चलो दैट इज द वे। ओके गाइस, बाय।